それでは安倍総理、よろしくお願い申し上げます。モディインド首相の訪日をここから歓迎いたします。モディ首相は私の古い友人であり、5月にインドの新しい首相に就任されて以来、その訪日を心待ちにしておりました。I'd like to extend my warmest welcome to India's Prime Minister Modi for his visit to Japan. Mr. Modi is an old friend of mine, and ever since he became Prime Minister in May, I have been longing for him to visit Japan. 土曜日にはモディ首相を京都でお迎えいたしまして、夕食を共にし、旧交を温めました。昨日は2人で当時を訪問し、仏教を通じた古からの日印両国の絆の深さに改めて思いをいたしました。On Saturday, I greeted the Prime Minister in Kyoto, and we renewed our friendship over dinner. Yesterday, as we visited the Toji Temple together, I ruminated about the deepness of the age-old ties between Japan and India brought about through Buddhism. 今回、モディ首相は南アジア以外で最初の二国間の公式訪問先として日本を選ばれ、日印関係のさらなる発展に並々ならぬ決意を示されました。私は常々、日印関係は世界で最も可能性を秘めた関係であると言ってまいりました。今後はモディ首相と手に手を取り合って、あらゆる分野で抜本的に関係を強化し、特別な戦略的グローバルパートナーシップへと引き上げていく考えであります。This time, Prime Minister Modi chose Japan for his first official bilateral visit outside of South Asia, indicating his great determination to further develop Japan-India ties. I have said on many occasions that our bilateral relationship is one with the most potential in the world. Together, working hand in hand with Prime Minister Modi, I intend to fundamentally strengthen our relationship in every field, to elevate our relationship to a special strategic and global partnership. 本日の首脳会談では、モディ首相との間で政治安全保障、経済協力、文化、人的交流など、日印間の多くの課題について有意義な意見交換を行いました。In today's summit meeting, I was able to have fruitful exchange of views with the Prime Minister on the various aspects of our bilateral relationship, such as politics, security, economy, economic cooperation, cultural and people-to-people exchange. 政治安全保障については、包括的な安全保障、防衛協力を推進していくことで一致をいたしました。また、防衛装備協力に関する協議の開始や、海上安全保障及び救難飛行艇 US2 に関する協力の一層の推進にも合意をいたしました。対話と協力の深化、拡大を通じ、日印の政治安全保障協力が一層進化することを期待しています。Concerning political and security matters, we agreed to pursue comprehensive security and defense cooperation. We also agreed to initiate defense equipment cooperation discussions, and also to further promote cooperation in maritime security and US-2, the amphibious rescue aircraft. Through deeper and expanded dialogue and cooperation, I hope that political and security cooperation between Japan and India will be deepened further. 経済協力に関しては、日本の対イン投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資及び日印進出企業数を倍増させることを両国で取り組む共通の目標とし、今後5年間で日本からインドに対し ODA を含む約 3.5 兆円規模の投融資が実現するよう努力する考えを伝えました。Concerning economic and economic cooperation matters, we agreed to work toward a common goal of dramatically increasing Japanese investment to India, specifically to double the amount of investment
and the number of Japanese companies in India in 5 years. I convey to the Prime Minister that we will make efforts to realize over the next 5 years approximately 3.5 trillion yen of investment and financing from Japan to India, including ODA. この他にもインドへの新幹線投入、インドと近隣諸国の連結性強化等、象徴的な案件について協力をさらに進めていくことで一致をいたしました。In addition to that, we also agreed to further collaborate on such symbolic projects as the introduction of the Shinkansen bullet train to India and the enhancement of connectivity between India and its neighboring countries. 原子力協力については、過去数ヶ月間に交渉に重要な進展がありました。Concerning nuclear cooperation, there has been important progress over the past several months. 本日、モディ首相と率直な話し合いを行い、この問題について双方の理解がさらに深まりました。I was able to have frank discussions with Prime Minister Modi on this issue, and we were able to deepen our understanding on both sides. モディ首相と私は日印の戦略的パートナーシップ強化のためにも、この交渉の早期妥結を目指して、交渉を加速させるよう事務方に指示をしました。Both Prime Minister Modi and I instructed our officials to accelerate the negotiations with the goal of early conclusion of agreement so that we may strengthen our strategic partnership. 文化・人的交流の拡大は、日印関係を一層裾野の広いものとするために取り組むべき重要な課題であります。本日の会談を通じて、女性が輝く社会の実現、留学生の大幅な増加、宇宙や海洋に関する研究協力の推進等で一致をいたしました。Expanding cultural and human exchange is an important part of our efforts to further broaden the base of Japan-India relations. In today's meeting, we agreed to promote the realization of a society in which women shine, substantially increase the number of exchange students, and cooperate in space and maritime research. また、二国間関係に加えて、地域情勢や国連安保理改革といったグローバルな課題についても、大変有意義な意見交換を行うことができました。In addition to bilateral issues, we had a very meaningful exchange of views on regional situations and global issues such as the UN Security Council reform. 今回のモディ首相の来日を契機といたしまして、首相と協力をして、日本とインドの戦略的協力関係を一層強化してまいります。With Prime Minister Modi's visit to Japan providing new impetus, I would like to work with him to further strengthen the strategic cooperative relationship between Japan and India. ありがとうございました。Thank you very much. それでは続きまして、モディ首相からご発言をいただきます。ありがとうございました。जापान आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने यह निर्णय लिया था कि अपने पड़ोस के बाहर सबसे पहली बायलैटरल विजिट जापान की होगी। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आबे ने मुझे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर जापान आने का अवसर दिया और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। 私は日本に来て大変嬉しく存じており On ま this す。 occasion of my visit to Japan, 首 I'm 相 very に much なってから delighted. 私の周 Ever since 辺 I took 国 my office, 以外では Prime 2カ Minister, 国関係の
ために海外を訪問するときには Whenever I 日本を visit 初めの other 行く先 partners, にしたいというふうに思っ I たときに decided that 安 Japan 倍 should 総 be 理 the が first country 私 to が首相 visit になって outside of から my 100 region. 日間で And in 私を招 fact, 待してくれまして within こういう機 100会を years 与えてく after れ I たこと assumed で the post of これ prime が実現できた ministership, ことは the 大変嬉しく存じ Prime ています Minister し Abe kindly 安倍 invited 総 me 理 to と Japan, 私の and I'm 間で very の much 友 delighted. 情関係がこれで And もっと in 深くなっ fact, たと思っており I ま now す feel that the friendship यह between इस Prime बात Minister का Abe प्रमाण and है myself कि are भारत even जापान को farther सबसे deepened. घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्रों में समझता है और हमारी विदेश नीति में जापान की ऊंची प्राथमिकता है क्योंकि भारत के विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र और विश्व के लिए प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है この私の今回の日本の訪 On this 問が occasion, my 日 visit 本 to とインド Japan, がどれだけ深い関係を持っているか that どれ is だ a け信 manifestation 用しているか of the それ deep に対する証拠であります relationship 我 as 々 well の as the 海 trust 外の between Japan 海 and 外への India. 政策つまり foreign 外交関係では日本が一番非常に高い位 In 置づけに fact, ありま focus す on Japan as その理 the 由として country は of the highest 日本 priority. はインド That の is 開発に because 対して成長に対して非常に重要な Japan 役割を has 果 been たしていま playing す an important role for 日本もインド promoting も growth and 平和 development そ of し India. て平和国であ Both るし countries 民主主 love 義国家であります peace し and both これ are までに一緒にやっ countries て of きていることで democracy, and in そして fact こ we れか have ら been やってい working くことで together, 世 and we're 界に going 対 to work してこの together 地域に対し to て the world 大 and き to な the 影響を region 与えることができると思っ to ております produce a significant impact जिस प्रकार and से influence. प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है सम्मान किया है और अपना अमूल्य समय दिया है इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं यह उनके भारत के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है यहां हर क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका भारत के प्रति प्रेम और आदर देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है 私は京都でも感じましたし、東京でも同じことを感じましたんですが、安倍総理に対して安倍総理からいただいた歓迎というものが我々にとって非常に大事なもので、安倍総理が貴重な時間を割いて我々のために時間を作ってくれたことに関して感謝を申し上げたいと思います。これは安倍総理が我々そしてインド全体に対してどれだけの親しみそしてどれだけの確信を持っているかということの象徴であります。これが一緒になって私がこの地域の中ではこういうふうに一緒に活動できることが大変私にとっては嬉しいことであります。क्योटो में भेंट और एक शिखर सम्मेलन से मैं केवल संतुष्टि नहीं हूं बल्कि मुझ में इस भारत और जापान की साझेदारी के विश्वास और गहरा हो गया है मुझे नया उत्साह और नई उम्मीदें जगी है 京都での我々のお話し合い、そして今日の首脳会談でのお話し合いに私は満足しているだけではなくて、今回のお話し合いの中から私が日本とインドのパートナーシップに関しては私の信じたことをもっと深くなった進化したというふうに思っています。結果としては私に対しては熱意と希望を与えてくれたと思っています。मेरे मित्र प्रधानमंत्री आबे ने हमारी चर्चा के बारे में काफी उल्लेख किया है और आपके सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट और फैक्टशीट भी है इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं मैं इस संबंध में शिखर सम्मेलन को किस दृष्टिकोण से देखता हूं उसी विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं 先ほど安倍総理の方から我々が話した内容についてかなり具体的に説明があったので私はわざわざそれをここで繰り返す必要がないと思っていますここで私の方からこの首脳会談のどういう観点でどういうふうに見ているかについて少し話したいと思います सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है
今日のお話し合いの中での最も大事なことが、今まであった戦略的グローバルパートナーシップに特別という言葉を単語を加えまして、特別戦略グローバルパートナーシップというところにという次元に立ち上げる、持っていくということに決心しました。भारत और जापान की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप कालातीत है, वो समय के बंधनों से बंधी हुई नहीं है, लेकिन आज शासकीय दायरे में ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में आप सबके सामने हम खड़े हैं। インドと日本の推進関係というのが時を超えた非常に古来からの関係でありまして、今日しかしここで導いたのがこういう特別な戦略的グローバルパートナーシップというのが今日ここで導かれたものであります。मेरी दृष्टि से सिर्फ शब्द नहीं, ये एक कोई एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना इतना ही नहीं है। हम दोनों देश इस विषय में अत्यंत गंभीर हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा ये संबंध का नया रूप अधिक परिणामकारी और अधिक दायित्वपूर्ण रहेगा। この特別というのが、単なる言葉ではなくて、一つのカテゴリーから別のカテゴリーに変わったものではなくて、我々のこの2カ国、日本とインドというのが慎重に考えて使った単語であります。成果につながる、成果を生むというふうには見ております。ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। この特別という単語というのが先ほど説明した通りですが、これが戦略的な意味からインドでこれから起きていく変化には日本の役割が今までよりももっと重要なものになるというふうに見ております。今日安倍総理の方から私に対しては約束されたというもの、ある意味では誓ってくれたという観点ですけれども、ですけれど、インドの包括的な開発、インクルーシブデベロップメントに日本のインドに対する協力というのがこれからもっと大きくなっていくということです。indicated that हम लोग भली भांति समझ the role सकते of हैं कि Japan आज to be played in प्रधानमंत्री this आबे ने respect would be even more important in the future. 3.5 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर मैं भारत के रुपयों के संदर्भ में कहूं तो 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। 安倍総理がインドに対してどれだけコミットしているかというのが一つのことから言うと、今日の会合の中ではインドに対してこれから5年間で官民両合わせて 3.5 兆円の投資を約束した、そちらをというのを目的にしたというものであります。この観点から私、この安倍総理の考えに対して心から感謝したいと思います。प्रधानमंत्री जी ने मेरे विजन को समझते हुए हर क्षेत्र में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। でこの協力は一つの分野に限るものではなくて、安倍総理方が私のビジョンを理解してくれまして、すべての分野で協力してくれることに対して約束してくれました。आज मैं आपसे जब गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहा था तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए आपको क्या मदद चाहिए।
先ほどガンジス川をきれいにする話をしましたら、それに対してすぐ反応としては、具体的にどういうことを我々にやってほしいか、それをぜひ知らせてくださいということが言われました。एक विकसित और तेज गति से बढ़ता भारत न केवल एक विशाल जिससे जापान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करेगा और स्थिरता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों देशों का लाभ है। 開発しつつ、そして早いペースで開発しつつインドというのが他の国、特に日本にとって大きな機会であるというふうには思っております。これで世界の他の民主主義国家も強くなっていくというふうには思っております。安定ももっと強化していくでしょう。こういうことでインドと日本両方がメリットが得られるというふうには見ております。और भी एक बात है कि हमारे संबंध सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं है, बल्कि इस संबंध में और भी कई आयाम जुड़े हुए हैं। हम राजनीतिक संवाद और सहयोग को एक नए स्तर पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के पक्ष में हैं। 我々の関係というのが経済関係に限るものではなくて、そこにはあらゆる側面、他の側面もあります。我々の政治的なこれからの話し合い、または協力を高い別の新しい次元に持っていきたいと思っております。हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। दोनों देशों का भविष्य सामुद्रिक सुरक्षा के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। 我々の両国の間では防衛関係というのが大事なものでありまして、それにも新しい方向性をつけたというものであります。कई और क्षेत्रों में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रसायन, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास, ऐसे क्षेत्रों में भी हम अपने दोनों देशों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। समाज की चुनौती का समाधान ढूंढने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। 防衛に関しては話し合いだけではなくて、または共同訓練だけではなくて、そこでは技術または設備のところでの協力または可能性も探っていきたいと思います。両国の将来がそれに絡んでいるというふうに思っております。その他のものとしては最先端技術、科学、教育技術、それから研究開発の分野でも我々がお互いに得できるところがありまして、社会の中での栄光のに対してもそれで対応できるというふうに思っております。विकसित भारत और सफल जापान दोनों देशों के लिए यह लाभप्रद है, परंतु उससे अधिक महत्व यह है कि एशिया और विश्व शांति में शांति, स्थिरता, समृद्धि को और एकता बढ़ाने में बड़ा योगदान देंगे। 成長したインド、成功した日本、これが両国にとって非常に大事なものでありまして、得するものであります。しかしそれよりも大事なことがアジアに対して、そして世界に対して平和、安定性、繁栄、そして団結、そういったものに対しても貢献できるというふうに見ています。 इसका यह अर्थ है कि भारत और जापान एशिया के दो सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं और एशिया की तीन सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में हैं और हमारे संबंध इस पूरे क्षेत्र पर तो प्रभाव करेंगे ही, परंतु सारे विश्व पर भी इसका प्रभाव अनेक प्रकार से होने की संभावना में देखता हूं। 国際的な観点から申し上げると、インドと日本がアジアの中では最も大事な民主主義国家であるということは言うまでもありません。アジアの中では3つの
大経済国家でも3つの中に入っているということでもあります。 Those are two この countries 2カ国 of の関係というのがこの地域だけではなくて世界全体にさまざまな方法で影響を in 与えるという various ふうに見 ways てい will ます。 make an influence not only to पूरा the विश्व region but also एक to बात the को world as a मानता है whole. भली भांति और कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूह रचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। 世界の中ではアジアというのが21世紀はアジアの世紀ということがすべてそれに対して認識しておりますし、それに対して何の混乱もないという状況であります。しかしそのアジアの世紀というのが質の面でどんな質になるか、どういう形になるかというのが今のところははっきりしないんですけれど、それが決まるのは日本とインドはどういうふうに協力してどういう方向にそれを持っていくかによって決まると思います。 यह काम हम भगवान बुद्ध के शांति और संवाद के रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। でこの役割を果たすためには我々は仏様が教えた道、つまり平和、そしてダイアログで物事を解決するによって他の国々と協力しながらこの目的を達成したいと思っております。 दूसरा, दुनिया में कई विषयों पर and at the same time seek for cooperation with other countries. non-proliferation, space security, cyber security, UN reforms और इस क्षेत्र के रीजनल फोरम्स में साथ मिलकर के हमारे जुड़े हुए हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हमारी साझेदारी अन्य क्षेत्र और विभिन्न देशों को लाभ पहुंचा सकती है, जहां हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे एशिया में हो या और क्षेत्रों में। आने वाले दिनों में हम इसे प्राथमिकता देने वाले हैं। 第2番目には世界の中での課題となっているもの、例えば不拡散、宇宙のセキュリティ、サイバーセキュリティ、国連安保理改革、地域のいろんなフォーラムでの協力というのが我々にとってそこで共通な課題、懸念事に対してそれに対して話し合いが我々ができると思います。それに基づいて他のところで他の地域でもさまざまな課題に対してさまざまな国に対して我々の方から影響を与えることもできます。これに対してもこれから一緒になって協力しながら課題別で活動していきたいと思います。 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जब हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, इसका मतलब यह है कि पहले दोनों देशों के लिए इन संबंधों का महत्व बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों की विदेश नीति में इस संबंध की प्राथमिकता नया रूप लेगी और हम दोनों देश ने निर्णय लिया है कि संबंध को बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया जाएगा। 今まで戦略グローバルパートナーシップと言われたものが今度スペシャルという単語がついたというものですけれど、というのが今までの戦略グローバルパートナーシップというのがその重要性が非常に高まったというふうに見ております。インドと日本両国に対してその外交に関してもそうですし、これが新しい位置づけということになります。で、両国で決定したものとしてはこの関係を強めるために前向きに持っていくために特別に我々が力を入れていきたいと思います。 हमारे सहयोग के अवसर की कोई सीमा नहीं है, न ही दोनों तरफ इरादे और इच्छा की कोई कमी है। और अगर हमें अपने पोटेंशियल को हासिल करना है तो स्पेशल तरीके से काम करना होगा। इसलिए मैंने जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने का भी निर्णय लिया है।
我々の協力というものは何のリミットも上限というものがありません。で、そこに2カ国間の間での意向または願望についても十分でそれがあるということが言えます。そういう意味でその可能性を実現するためには特別なやり方を導入するためには私がファーストトラックチャンネルを導入することを決めました。दूसरा हमने आज जो निर्णय लिए हैं उनसे हमारा गहरा आपसी विश्वास एक नए स्तर तक पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों में हमने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के सहयोग में प्रगति हुई है। आज हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की है। हम इस द्वारा आपसी समय बढ़ाने में सफल हुए हैं, समझ बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम को जल्द समाप्त करें ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो। その他に今日我々が決定したことのもう一つですが、我々の間での2カ国の間での自信が非常に深まったことであります。この数ヶ月で民生用原子力エネルギーの協力について非常に進歩はしてきております。で、今日具体的にこの課題に関しては話をしまして理解度を深めたというものであります。で、この話し合いに基づいて我々の一般的な理解、2カ国の間での一般的な理解も深まったというふうには思っております。で、今日事務方の方には指示を出しまして、この話し合いを早く完結する方向に持っていくように指示を出しました。その結果から我々の戦略パートナーシップがもっと強くなっていくというふうに存じています。उसी प्रकार जापान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारी कुछ कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे। यह भी नए आपसी विश्वास का प्रमाण है। रक्षा के क्षेत्र में एमओयू साइन किया है और टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट पर सहयोग का निर्णय किया है। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध वास्तविक रूप में एक नए स्तर पर पहुंचे हैं। その他に日本の方で決定されたこととしては、インドのいくつかの会社に対して今までコントロール抑制がありましたものをそれをそのリストから取ることを決定したということと、防衛に関して MOU を調印されたということと、技術そして設備に対する協力を深めていくということが決定されたことであります。こういったすべてのことから読んでみると、日本とインドの関係が実際的に新しい次元の方に向かっているように見えます。उसी प्रकार आर्थिक संबंधों को कई गुना बढ़ाने का हमने जो संकल्प किया है और जिस मात्रा में जापान ने हमारी सहायता करने का वचन और आश्वासन दिया है, वो भी विशेष संबंध का ही प्रमाण है। で、経済関係ですが、それを倍々と増やす、それに対するそのコミットメントということは、日本とインドの間での協力に対する約束事というのがどういう位置づけにあるかということを示している証拠であります。इस संबंध की विशेषता हमारे संबंध की प्राचीन नींव और दोनों देशों के लोगों के में अटूट प्रेम और आदर भी अंदर निहित है। こういう日本とインドの関係の特別なその位置づけというのが、インドと日本が非常に古い時からの関係、つまり基礎が非常に古いというものがありまして、そして人と人の間での愛情またはつながりが、その絆というのが非常に昔から尊重されているものであります。हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे भविष्य में संबंध और मजबूत होंगे। विशेष रूप से यूथ एक्सचेंज, लैंग्वेज ट्रेनिंग, हिंदी और जापानी भाषा में प्रशिक्षण, कल्चरल एक्सचेंज, अनुसंधान और विकास में साथ काम करना।
今日決議に至ったもののおかげで、 Thanks to いろいろ decisions と made today, 関係が強化されていきますが、そ we の will 中で see は the 特別 opening にこ up こで申 of し上げ new ると、 relationship, and 若 I'd 者 like to の note 交 some of 流、 them, youth 言語の exchange, 日本語、そして and ヒンディ語 language の training such as 両国の間 Japanese での and Hindi, 研修、そして文化交流、 as 研 well 究 as 開発、 culture 成 exchange, 長を research 一緒 and にやってい development, くことなどが入 and っており to ます promote growth इतना ही together. नहीं, हमने जो 5 और एग्रीमेंट साइन किए हैं, स्वास्थ्य, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वुमेन्स डेवलपमेंट, रोड्स एवं क्योटो वाराणसी के बीच, वह दिखाते हैं कि हमारे संबंध हर क्षेत्र में उभर रहे हैं और लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं. これだけではなくて、今回、他にも5つの協定を調印しました。それがヘルス、健康関係、そしてクリーンまたは最先端できるエネルギー、それから女性の開発、道路に関するもの、そして京都とバラナシの姉妹関係、そういったものも日本とインドの関係がさまざまな分野で広がっていることを示しております。 And those agreements मैं demonstrate प्रधानमंत्री the आबे expansion का of the partnership between two countries. आभार प्रकट करता हूं. मुझे विश्वास है कि हमारे संबंधों की यह एक नई सुबह है और नए विश्वास और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम जो नए स्तर की बात करते हैं उसको हम जल्द ही वास्तविकता में बदल देंगे. मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का और मेरे परम मित्र का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. जापान के नागरिकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. ここで最後に改めて、 Lastly, 安倍総理に対して I'd like to once again 私の方からインドを代表しまして感謝の気持ちを表 express したい my と思い hearty ます。 appreciation to Prime こ Minister れから Abe on behalf 我々 of の関係 India. が新しいスタートを切ると Toward 見 the ており future, ま we will す。 make a new start 今日 to 私が国連 the 首脳会談が relationship 終わって between two countries 新しい after the 自信 summit そして meeting. 新しいエネルギーを得たというふうに思ってお I りま now す。 gained new この結 energy 果 and としては confidence, 我々の関係が and as a result, もっと上 the の relationship 次元 between に two countries 動いていくと would be いうこと further それを promoted 実現できる to というふうに higher 思っておりま dimension, す。 and 改 we are めて confident ここ that で we can realize 私の that. 友人である Once again, to 安倍総 my 理、そ friend して Prime 日本の Minister 国民に対して Abe and to 心 the から感謝 Japanese を申し people, 上げたいと I'd 思い like ます to extend my hearty appreciation to you all. Thank you. どうもありがとうございました。 Thank you. それでは以上をもちまして、両国首脳によります共同記者発表を終わらせたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。